Hello everyone and welcome to our YouTube channel Humanities Adda. In this video, we are going to revise chapter 4 of class 6 NCERT, and I assume you have already read the NCERT of class 6 history book. So just let us begin. First of all, we are going to read about the Vedas. Ved आपके यहाँ पे we have 4 Vedas: Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved and Athar Ved. Out of which Rig Ved is the oldest, and you will see here time period यहाँ पे 3500 years ago it is given. But you just remember that the compilation period of the Vedas were from 1500 BCE till 500 BCE approximately. And talking of Rig Ved, you see that it contains around more than 1000 hymns. Approximately, if you see, it is 1028 hymns, जिसको हम सूक्त भी बोलते हैं. और इसमें आपको different गॉड्स के लिए hymns मिल जाएंगे, जिसमें आपके जो मेन डिटीज हैं, they are अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इंद्र, वॉरियर गॉड, एंड सोम, जो आपके that is a plant from which a special drink was prepared basically. ये hymns sages द्वारा एक तरीके से कंपोज की जाती थी. It was composed by different rishis or sages, you can say. And you will see that most of these sages or rishis जो थे यहाँ पे men होंगे. Men were the one who were composing these hymns, and women were also there, but they were very few in number. ऋग्वेद में जो संस्कृत यूज हुई है वो वैदिक संस्कृत है, ओल्ड संस्कृत है, which is very different from the संस्कृत which we read in our school, school time जब हम संस्कृत पढ़ते थे, या फिर जो भी संस्कृत से आप familiar हो. Then earlier आप initially देखोगे तो ऋग्वेद वेद जो है basically they were recited and heard, तो उन्हें actually में पढ़ा नहीं जाता था. But initially then it was decided that वेद को अब लिख दिया जाएगा. It was decided to write them down, and then you will see from 1500 BCE onwards इनका जो compilation है वो start हो जाता है, writing जो है वो start हो जाएगी. Historians ऋग्वेद से या फिर किसी और वेद से किस तरीके से हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, हिस्ट्री को रिट्रीव करते हैं. So in some of the hymns they are in the form of dialogues also. So one of the source is given over here. One of the hymn का आपको ट्रांसलेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके सेज विश्वामित्र जो हैं वो 2 रिवर से बात कर रहे हैं. ही इज ट्राइंग टू टॉक टू 2 ऑफ द रिवर्स, ब्यास एंड सतलज, जो आपके इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, and they were also worshipped as goddesses. So he's trying to talk to them. You can go through this source, and just remember that the rivers Indus and its other tributaries, they were known. They knew about these peoples. They knew about them, the early Vedic period के जो लोग थे and later Vedic के जो लोग थे, बेसिकली जिनको आर्यंस भी कहा जाता है, तो वो इन लोगों को इन रिवर्स के बारे में पता था. एंड सरस्वती के बारे में भी पता था, बिकॉज ये जो rivers हैं, they are named in the hymns, they are named frequently in the hymns. But on the other hand, Ganga and Yamuna are named only once. So you have to keep in mind this thing. Then cattle prayers हैं basically ऋग्वेद में. किस चीज के लिए प्रेयर करते थे ये लोग? कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए. चिल्ड्रन में भी आप देखोगे स्पेसिफिकली सन्स के लिए प्रेयर की जाती थी, एंड हॉर्सेस के लिए प्रेयर हुआ करती थी. हॉर्सेस के लिए क्यों? बिकॉज हॉर्सेस आपके चैरियट्स के साथ अटैच करके बैटल्स के लिए काफी यूजफुल हुआ करते थे. व्हाई बैटल्स वर फॉट? बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड, एंड इट वाज दे वर आल्सो फॉट फॉर वाटर and people, to capture people. So these things, 3 things were there for which you will see battles were fought. And उसमें से फिर जो wealth कलेक्ट करेंगे ये लोग, तो priest को देंगे and डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में. कुछ wealth सैक्रिफाइस परफॉर्म करने के लिए एक तरीके से यूज करेंगे, यजनास जिसको आप बोलोगे. एंड ऑफरिंग्स देंगे गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए, जो सैक्रिफाइसेस में ऑफरिंग्स दी जाती थी. घी, ग्रेन एंड कुछ केसेस में आप देखोगे एनिमल्स को भी सैक्रिफाइस किया जाता था. आर्मी का अगर आप केस देखो तो वैदिक पीरियड में यू विल सी नो रेगुलर आर्मी, बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस. तो आप असेंबलीज आपको मिल जाएंगी. इफ यू रीड द ओल्ड एनसीईआरटी यू विल आल्सो गेट द नेम्स ऑफ दोज असेंबलीज. सो प्लीज इफ यू आर क्योंकि आपके इस बुक में वैदिक पीरियड के बारे में यू डू नॉट हैव दैट मच डिटेल, एंड आफ्टर दिस यू विल नॉट काउंटर द वैदिक पीरियड in your 12th NCERT.
So it's better that you read the old NCERT also, RS Sharma wali, or you go for the Tamil Nadu board book. That is also good. So दोनों में से कोई एक book you should read for the Vedic period, and the other subsequent things. So आप देखो leaders भी ये लोग choose करेंगे who are often brave and skillful warriors. नाउ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. तो वर्क के बेसिस पे अगर आप देखोगे, बेसिस ऑफ वर्क पे दो ग्रुप में ये लोग डिसाइड एक तरीके से डिवाइड करते थे. एक तो हो गया आपके प्रीस्ट जिनको ब्राह्मण्स भी कहा जाता था, एंड देन ऑन द अदर हैंड देयर वर द राजास. ओके, तो राजास अगर आप देखो तो दे वर नॉट द राजास जैसा हम अभी पिक्चर करते हैं, विद द कैपिटल सिटीज एंड द पैलेसेस, आर्मीज और टैक्स कलेक्ट करते हुए राजा. सो दे वर नॉट लाइक दैट. दे यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ द कम्युनिटी लाइक दैट. नॉर्मल आपके राजा होंगे. जनरली आप देखोगे इस टाइम पे सन्स जो है, बेटे जो है, डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा. तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिला. दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड व्हेन वी कम टू द पीपल, how the people were named, you will see the word jana will be used and or the term wish will be used. तो वैश्या भी आप देखोगे तो it comes from the word wish. सो पुरु जना या फिर आप पुरु विश और भरत जना और भरता विश, यदु जना और विश, आप देखते हो इन सब का मेंशन आपको मिलता है वेद में, ऋग्वेद में मिल जाता है. समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स, जिन्होंने ये हिम्स कंपोज किए थे, उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है एज आर्यास एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स एज दासास और दस्यूस. तो अपने आप को जिन लोगों ने ये हिम्स कंपोज किए हैं, वैदिक हिम्स कंपोज किए हैं, उन्होंने दे कंसीडर्ड एंड दे कॉल्ड देमसेल्फ एज द आर्यास. एंड ऑन द अदर हैंड जो बाकी जो लोग थे, उन्हें दासास एंड दस्यूस से डेजिग्नेट किया है, उन्हें एक तरीके से उन्हें नेम दिया है ये. एंड दीज वर द पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइस. तो ये दासास और दस्यूस थे, ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं कर रहे थे. प्रोबेबली दे वर नॉट दी, आपका एक तरीके से आप कह सकते हो उस टाइम पे वैदिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही थी उसके ये लोग आउट. दे हैड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशन, यू कैन से, एंड दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज. दे वर नॉट स्पीकिंग संस्कृत, दे वर नॉट यूजिंग संस्कृत, यू कैन से. लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव. बाद में ये जो टर्म है दास और दासी स्लेव के लिए यूज होने लगेगा. स्लेव्स वर women and men who were often captured in war, and they were treated as property of their owners who could make them whatever work they wanted, who could make them do whatever work they wanted, so बाद में आप देखते हो कि दासा एंड दासी को हम स्लेव की तरह, उसका मतलब हम स्लेव एज अ उसका मीनिंग जो है वो स्लेव में कन्वर्ट हो जाती है एट लेटर स्टेज. देन ऋग्वेद का जो कॉम्पोजिशन का जो एरिया है वो आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ही है. एंड वी विल सी दैट डेवलपमेंट्स वर देयर इन अदर पार्ट्स आल्सो of the subcontinent. Let us look in other parts of the subcontinent. Now we will be looking at the megalithic culture, or you can say the story of the megaliths. Now stone boulders, आप देखते हो यहाँ पे एक image है. Just look at this image. Here you can look at this image and then see the paragraph over here. These stone boulders are known as megaliths. ये आपके बड़े बड़े stones हैं, इनको arrange किया जाता था. And why they were arranged carefully to mark the burial sites. Burial sites जहाँ पे dead body को गाड़ा गया है उसको mark करने के लिए stones particularly एक way में arrange किए जाते थे. And ये practice जो है erecting megaliths की, it began around 3000 years ago. It was contemporary time है जब north में आप देख रहे हो, north west region में you will see that Vedic period was flourishing and Vedic period was there. At the same time in the South India you will see, in the Deccan region in the South India and in the northeast region and in some parts of Kashmir, you will see that the megalithic burial sites will be there. So some important megalithic sites are shown on map 2. Map 2, here we can have a look at map 2. Just a second. आप यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रह्मगिरी है, and then you have the Adicha. I cannot just read that. Just a second. So you have these two sites given over here on your map too. Then while some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground.
तो आपके कुछ मेगालिथिक बरियल सरफेस पे है, कुछ अंडरग्राउंड है, एंड sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. कभी कभी आप देखोगे कि कुछ सर्कल में भी स्टोन्स अरेंज्ड हैं, कभी सिंगल लार्ज स्टोन वाज देयर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एंड दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियल्स beneath. तो दीज आर इंडिकेशंस कि बरियल्स है इसके स्टोन के नीचे, देयर आर बरियल्स. Okay, so this is the thing that was happening in South, Deccan, Northeast वाले region में you will see, and in some parts of the Jammu वाले region. Now all these burials have some common features. Common features क्या है? आप देखो कि dead were buried with distinctive pots. Pots के साथ bury किया जा रहा था इनको, which are called black and red ware. Black and red ware pot used there. Also found are tools and weapons or iron. So iron is also there. And Aryans के केस में जब हम देखते हैं, when we look at the Rigvedic period, you will see that iron is known and horses are also known, which were not known to the Harappan people. So these two things are there, which are present in case of the early Vedic period, later Vedic period, and also in case of the megaliths. Sometimes skeletons of horses, horse equipment, and ornaments of stone and gold are also found in the burials. Okay, so this much is clear, I guess. इतना हमने देख लिया है. एंड फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस. सोशल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो ब्रह्मगिरी में यू विल सी कि एक स्केलेटन है जो बरीड था 33 गोल्ड बीड्स के साथ, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल. सो इतने ज्यादा आप देख रहे हो कि प्रेशियस चीजों के साथ एक स्केलेटन बरीड है. दैट मीन्स, एंड अदर स्केलेटन्स इफ यू कंपेयर इट with the other skeletons, so they have only a few pots. That means कि some kind of social difference was there, कि आपको एक बरियल में काफी ज्यादा you can say precious objects मिल रहे हैं और दूसरे में सिर्फ pots मिल रहे हैं, pottery मिल रही है. तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि social differences was there in the megalithic sites, and these finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. Some were rich, others poor, some chiefs, other followers. Now, what burial spots meant for certain families? देखो आप let us see that कुछ जो आपके मेगालिथ्स हैं उसमें आप देखते हो कि more than one skeleton मिले हैं. This indicate that people perhaps belonging to the same family आपके एक ही place पे बरी किए गए थे, though not at the same time. तो आप एक तरीके से you will see that they were buried later through the pot holes. तो pot holes वहाँ पे बना के छोड़ देते थे. And when the family member died later on, तो उनको उसी जगह पे, सेम जगह पे पॉट होल्स के थ्रू बरी कर दिया जाता था. एंड stone circles or boulders placed on the surface, probably they served as the signpost to find the burial site of the family members, so that the so that people could return to the same place whenever they wanted to, and अपनी फैमिली के साथ ही बरी कर सके, एक तरीके से बरी हो सके after their death. Now इनाम गांव को अगर हम देखें, it is a site on the river Gho. I think just let us look at the map once again if you can locate Inam Gaon. Yeah, you can see Inam Gaon over here. इसकी लोकेशन देखते हैं, ये रिवर घोड़ के पास लोकेटेड है, and this river is tributary of the Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Again, this timeline is very vague. Here, adults were generally buried in the grounds, laid out straight with head towards the north. So, यहाँ पे आपको एक specific position देखने को मिल रही है बरी को, डेड बॉडी को ले करने की. हेड जो है आपको नॉर्थ डाला जा रहा था, मतलब पॉइंट किया जा रहा था. Sometimes burials were within the houses. Burials within the houses भी आपको देखने को मिल रहे हैं. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. तो वेसल्स जिसमें वाटर एंड फूड प्लेस करके डेड के साथ रखा जा रहा था वो भी मिल रहे हैं. एंड वन मैन यू विल सी देयर इज एविडेंस दैट वन मैन वाज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in a courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site, in the center of the settlement. So in the center of the settlement there is a one house which is one of the largest houses at the site. और उसमें आपको एक 4-legged clay में
क्ले जार में एक मैन मिल रहा है buried, and this house also had a granary. The body was placed in a cross-leg position. So this evidence we are getting from the site of Inamgaon, which is located on the banks of River Gode, you can say. So then you have what skeletal study tells us. You can just go through it. And यहाँ पे आपकी बुक की नाम मेंशन है, चरक संहिता, which was written by Charak during the time period of Kushan. कुशान डायनेस्टी के टाइम पीरियड में इस बुक को लिखा गया था बेसिकली बाय चरक. ना ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव के ऑक्यूपेशंस की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं दे हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सेसमे, एंड बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, many bearing cut marks हैं that show they have been used as food. तो ये कौन कौन से एनिमल्स हैं? कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस्पिक, सांबर, स्पॉटेड डियर. So these the long list, it is not important to remember all this. फिर आप यहाँ पे देखो, there are evidence of fruits, pear, amla, jamun, dates, and a variety of berries were collected. This portion is not that important. You can just read and then you can leave this portion after reading. Just keep in mind other things are important to remember about the Inam Gaon, where it is located, whether which site it was, megalithic site, and what sort of evidences are found from there, from this site. Okay, so I think this is all for this chapter. So thank you so much for watching. If you like this video, do subscribe to our channel. And once again, thank you so much for watching. Thank you.